गाइस तो आज है डे 2 इन जर्मनी। अपना मास्क लेना ज़रूरी है बिकॉज ऑल ट्रेन राइड्स, आप कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लो, हम लोग को द मास्क आर वेरी नेसेसरी। सो आज हम लोग जा रहे हैं गामिश पार्टनकर्कन। वहाँ से हम लोग जाएंगे इंसब्रुक। इंसब्रुक इज़ अ लिटिल टाउन इन ऑस्ट्रिया। सो फ्रॉम जर्मनी वी आर गोइंग टू अनदर कंट्री ऑस्ट्रिया। वैसे जर्नी है 2 घंटे की, 2 से ढाई घंटे की, एंड ईच वे पर पर्सन इज़ अबाउट 40 euros. But what we've done is, in fact, we will stop in a small town which is Garmisch-Partenkirchen. Partenkirchen भी बोलते हैं काफ़ी लोग। वहाँ पे हम लोग स्टॉप करके then we will head. It's just a detour, छोटा स्टॉप होगा। वहाँ से हम लोग detour करके जाएंगे सीधा इंसब्रुक। इंसब्रुक के लिए हम लोग एक ट्रेन पकड़ेंगे और फिर वहीं निकलेंगे। भाई लोग देखो, ये है जर्मन ट्रांसपोर्ट। अब रुक गई हमारी ट्रेन हाफ वे बिकॉज अपेरेंटली सम एक्सीडेंट हैज़ हैपेंड अप अहेड। तो ये ट्रेन गार्मिश नहीं जा सकती। अब हमको यहाँ उतार दिया। वील नाउ हेड टू सम गांव, वहाँ से फिर एक और बस। यार ये क्या नाटक है यानी। सो दैट्स व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। वी आर हियर एट ओबरमगांव। यहाँ से अब हम जाने वाले हैं गार्मिश। 4 घंटे ऑन द ट्रेन एंड द बस राइड हम लोग पहुँचे हैं गामिश पार्टेनकर्कन। तो ये गामिश एक बहुत छोटा टाउन है। वेरी इट्स स्की रिजॉर्ट, एक्चुअली एल्पाइन स्की रिजॉर्ट। यहाँ पे काफ़ी, आई थिंक एक ओलंपिक्स भी हुआ है, if I'm not wrong. बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टाउन। अगर किसी को स्की रिजॉर्ट के लिए आना है, इनफैक्ट यहीं से यू कैन कैच अ केबल कार टू जर्मनीज हाईएस्ट पीक विच इज़ द ज़ुगस्पिट्ज़। यहाँ का हाईएस्ट पीक है। यहाँ यहीं से लोग अपनी बस, ट्रेन, केबल कार्स, यू विल हैव टू चेक इट आउट। बट दिस इज़ अ स्टॉप। अब यहाँ से हमको जाना है। वैसे यहाँ से ट्रेन डायरेक्टली जाती थी इंसब्रुक, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ सम वर्क्स गोइंग अराउंड, एंड यहाँ के इतने अनरिलायबल हैं यार, वेरी अनरिलायबल। तो हमने जो ट्रेन पकड़ी थी फ्रॉम म्यूनिक, दैट हैड टू अब्रप्टली स्टॉप इन वन पॉइंट, आई डोंट इवन रिमेंबर, छोटा गांव था, वहाँ पे रुकी। तो यहाँ पे मैं वही बोल रहा था आप लोग को, दैट इट्स वेरी अनरिलायबल। यहाँ की ट्रेन्स का कोई भरोसा नहीं है। मैं आई वाज स्पीकिंग टू अ जर्मन लेडी अर्लियर। सो शी सेड कि यहाँ पे ट्रेन्स का ऐसा होता है कि अगर समझो दिन की 2 ट्रेन्स हैं, देयर आर टाइम्स व्हेन वन ट्रेन इज अब्रप्टली स्क्रैप्ड, सेइंग कि ये नहीं जाने वाली। सो यू हैव टू समहाउ मैनेज योरसेल्फ, कोई और ट्रेन पकड़ के, कोई और कनेक्शन लेके। सो थैंकफुली वी हैव द डीबी ऐप that helped us, that's what we are doing. DB ऐप पे वी कीप कॉन्स्टेंटली चेकिंग कहाँ कैंसिलेशन है, कहाँ, बिकॉज कैंसिलेशन अगर आते भी हैं तो लास्ट मिनट आते हैं, एंड दैट हैपन्स से सडनली, लाइक मे बी 15 minutes बिफोर द ट्रेन राइड बिगिंस। 15 मिनट पहले एक नोटिस आ जाएगा कि भाई ट्रेन नहीं चलने वाली। सो यू हैव टू मैनेज ऑन योर ओन। नाउ वी हैड dedicated a whole day to go to Innsbruck, which is the land of Swarovski. Mittenwald is famous for violin manufacturing. यहाँ पे बिटवीन द एल्प्स ये एक छोटा टाउन है, बवेरियन एल्प्स रादर। यहाँ पे इफ़ यू सी, चारों तरफ सिर्फ माउंटेन्स ही हैं, एंड नीचे ये मिटनवाल्ड करके गांव है। इट्स अ स्मॉल टाउन, एंड वायलिन्स, चेलोज ये यहीं मैन्युफैक्चर हुआ करते थे, अभी भी होते हैं, बट दिस इज़ वेयर इट ऑल बिगैन। यहाँ पे इनफैक्ट आई हैव हर्ड देयर इज़ अ वायलिन म्यूजियम एज वेल। बट चारों तरफ सिर्फ ब्यूटीफुल माउंटेन्स, स्नो कैप्ड माउंटेन्स, द एल्पाइन पीक्स अराउंड हियर, एंड बीच में एक छोटा सा टाउन। अब हम यहाँ से पकड़ेंगे अपनी ट्रेन एंड वी आर हेडिंग टू इंसब्रुक। या ट्रेन रेडी हो रही है। आई थिंक वी शुड बी रेडी टू गो। सो ये ट्रेन रेडी होगी, फिर हम चलेंगे। ये लग रहा नहीं कोई इंसब्रुक जा रहा है, सिर्फ हम ही जा रहे हैं। सिर्फ हम ही को खरीदना है स्वरोस्की। स्वरोस्की हियर वी कम। आज पूरी दुकान खरीद लेंगे। इधर से लेके इधर का पूरा रूट बनाया है। Early morning we started our trip from here. Unfortunately, abruptly जो stop मिला था हमको, which was here. हाँ, okay, the stop was here. यहाँ से फिर हम लोग बस में गए, which took an hour. फिर यहाँ से दूसरी बस पकड़ के हम लोग आए यहाँ। फिर यहाँ से दूसरी बस पकड़ के हम लोग पहुँचे यहाँ, which is Mittenwald.
अब यहाँ से हम ट्रेन पकड़ रहे हैं एंड विच विल टेक अस स्ट्रेट टू द लैंड ऑफ Swarovski. Guys, तो कभी करने का मौका मिले, so people who are coming to Austria, I would always advise them to definitely visit Salzburg and Innsbruck. ये दो जगह are very beautiful. मतलब not only just for young couples, oldies, people with kids, just for everyone. ये दो places are must visit. Innsbruck की कुछ और खास बातें हैं जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, but this place is magical. I mean, I wasn't expecting this route to be this beautiful. But अगर आपको कभी करने का मौका मिले तो गार्मिश से लेके एक जो ट्रेन रूट है या तो वो करें या तो फिर एक डिफरेंट जर्नी जो है which is from the place that we did, Mittelwald. So Mittelwald से या तो फिर आप directly from Garmisch अगर आपको Innsbruck जाने का चांस मिले तो ज़रूर करें. If you are with luggage, then obviously you need to check कि कौन-कौन सी points है जहाँ पे आपको ट्रेन चेंजेस करनी पड़ेंगी या बस चेंजेस करनी पड़ेंगी. आई वुड एडवाइज अगर आपके पास बैगेज नहीं है तो डेफिनेटली ट्राई दीज रूट्स. अगर बैगेज है तो देन इट मेक सेंस टू गो फ्रॉम म्यूनिक टू Innsbruck directly or Munich to Vienna directly. Depends, you know, what you want to do. But अगर आपके पास बैगेज और लगेज नहीं है, if you're traveling light, this is the best route to go. You might have to change a few stations and buses, but the most scenic routes that you'll get in winters must. गाइस, तो 3 घंटे की जर्नी हमने 6 घंटे में पूरी की है. स्टार्टेड विद अ ट्रेन, देन बस, देन ट्रेन. अब जाके 6 घंटे में हमारी जर्नी खत्म हुई है एंड फाइनली वी आर इन द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ इंसब्रुक. तो ये है इन द ऑस्ट्रियन रीजन, ऑस्ट्रिया में है, इन द स्टेट ऑफ टायरोल. ब्यूटीफुल सिटी. वी विजिटेड हियर इन 2018. तो इस बार हम लोग सिर्फ 2 चीज़ें करने आए हैं. एक तो है हम लोग की थोड़ी बहुत शॉपिंग, बट मेन इम्पॉर्टेंट थिंग, हाँ जी, जब तक मैडम शॉपिंग करेंगी अपनी तब तक हम आपसे बात करेंगे, थोड़ा इन्फॉर्मेशन, थोड़ा ज्ञान बांटेंगे. सो अबाउट इंसब्रुक. सो इट्स नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर. ए आर्किटेक्चर के लिए इट्स नोन ना, फेक नहीं रहा मैं बता रहा हूँ. ये चाचा से पूछो, चाचा. हाँ, दैट्स ट्रू. बट इंसब्रुक इज़ नोन फॉर इट्स कलरफुल बिल्डिंग्स. दिखाऊंगा, लोगों को दिखाऊंगा मैं, एंड मैं प्रूव कराऊंगा आपको कि इंसब्रुक इज़ नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर. तो ये एक्चुअली 2 चीज़ों के लिए बहुत फेमस है. वन इज़ Swarovski क्रिस्टल वॉल्टन. ये दिस इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ Swarovski. एंड द सेकंड इज़ द माउंटेन पीक ऑफ नॉटकेट. हम लोग जब 2018 में आए थे तब वी हैड स्टेड हियर कपल ऑफ नाइट्स. हमने तब लिया था यहाँ पे एक इंसब्रुक कार्ड, सिटी कार्ड होता है, उसमें हम लोग को एक्सेस मिला था टू विजिट Swarovski क्रिस्टल वॉल्टन एंड ऑल्सो द नॉटकेट माउंटेन रेंज जो है. तो एक फर्निकुलर राइड है जो सिटी से फ्यू मिनट्स में ही ऊपर पहुंच जाती है. इट्स अ ब्यूटीफुल साइट. यू गो ऑन द पीक ऑफ द माउंटेन. तो यहाँ का जो फर्निकुलर है, इट्स फर्निकुलर राइड. इट्स मोर लाइक अ केबल कार बट ऑन ग्राउंड. सो ग्राउंड से लेके इट्स अटैच्ड, इट गोज अप टू द माउंटेन. यहाँ के जो स्टेशंस हैं, दे आर डिज़ाइंड, दे आर नोन because they're designed by Zaha Hadid. She was a very famous architect. Dubai की भी कुछ buildings, if I'm not wrong, she's designed. So she has designed some beautiful buildings around the globe. उनमें से कुछ stations हैं यहाँ पे जो उसने डिज़ाइन किए हैं. So it's a beautiful city. It's not just for oldies. यहाँ पे काफ़ी oldies आते हैं वैसे, to just take a break from the hustle of the cities. But I recommend for children, young people, newly married couples, Salzburg and Innsbruck in Austria, a must visit. ये आप ज़रूर करें. If you have it in the itinerary around Europe, तो Austria आके, even if you spend 2-3 days here, you'll love it. The vibe of the city is amazing.
तो गाइस हमारे साथ बहुत बड़ा कूंडा हो चुका है। हम लोग आए थे इतना दूर, इतनी लंबी जर्नी करके, वी डिडंट फाइंड द स्टफ दैट वी वर लुकिंग फॉर, बट ठीक है, कोई नहीं, होता है। इट वाज मेंट टू बी। शायद हम लोग ये सीनिक रास्ता एंड मे बी एक न्यू सिटी वापस करने, घूमने फिरने वापस आए थे। सो 2018 व्हेन वी वर हियर, हम लोग को काफ़ी अच्छा, आई वुड से बहुत अच्छा डिस्काउंट मिला था at Swarovski, discounted items in fact, and very reasonable prices. It made sense because obviously it's a home of Swarovski. But this time around, I think they've changed a lot of things. So there's no more those offers anymore. It's as good as buying in Dubai, to be frank. But it doesn't make any sense to come all the way here to buy Swarovski. अब चल रहे हैं हम लोग अपनी next destination पे, तब तक के लिए गाइस, तो हम पहुंच गए Schnitzel Chardonnay। कैसा लगा मेरा मजाक? गाइस, हम पहुंच गए Chardonnay। Chardonnay से हमको लेनी है बस से हम, बिकॉज द ट्रेन सर्विस इज डिस्टर्बटेड बिटवीन Chardonnay एंड Garmisch। तो जो ट्रेन सर्विस है टिल दैट पॉइंट इज डिस्टर्बटेड, दैट्स द रीजन दे आर गिविंग अ बस सर्विस। तो बस लेके हम जाएंगे 45 मिनट्स टिल वी रीच Garmisch। Garmisch में मैं जैसे बोल रहा था आप लोग को, अगर किसी को भी चांस मिले, यू कैन स्पेंड अ डे देयर एटलीस्ट। अगर वो नहीं तो एटलीस्ट जब आप वियना प्लान करते हो ऑस्ट्रिया, तो डू मेक अ स्टॉप एट आइदर साल्जबर्ग और Innsbruck, one of the best cities to be in, or you know the vibe is amazing. अगर आपको ठंड अच्छी लगती है तो ठंड में वाइब अलग है, ऑब्वियसली इन समर में वाइब अलग है, सो जस्ट अप टू यू व्हाट यू डिसाइड। बट वन प्रो टिप, जब आप इन कंट्रीज़ में आते हो तो इंश्योर दैट इफ़ यूर लैंडिंग इन जर्मनी, अगर आप ट्रेन यूज़ कर रहे हो तो डू डाउनलोड द DB ऐप। अगर स्विट्ज़रलैंड में हो तो SBB ऐप, और अगर ऑस्ट्रिया आते हो तो OVB ऐप। ये तीनों apps will be very helpful in checking the timings, checking any disruption of the services. It's like a complete, know-how of how you can handle it if you're coming on a trip alone yourself. अगर tour packages में आ रहे हो तो obviously everything will be, well informed. But अगर खुद ही कर रहे हो, like how we usually manage, the best thing to do is download these apps, check all the timings there, check all the connections there. Everything is very clearly mentioned. It's the best in terms of how you can handle yourselves. We also checked a few rent-a-car options, but rent-a-car options were not working out feasible because we had to move from Switzerland to Germany to Austria for a bit. Austria से हम जा रहे हैं, Germany back again tonight. Germany से फिर हमको आगे बढ़ना है Düsseldorf within Germany itself. From there we are heading to Netherlands. Netherlands से शायद हम लोग एक डे ट्रिप करें to Belgium, Brussels, maybe, so that's on the cards. So we just thought that rent-a-car might not work well for us. That is the reason we opted for train connections, and it works out very feasible and also very handy. It's just like hop on, hop off, kar lo. Works out best. Thank you for watching the video, guys. See you in the next video. Until then, bye bye.